ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीहरिः अथ श्रीनारायणकवच राजोवाच यया गुप्ताः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्यो विनिर्जित्य त्रैलोक्यावुजे श्रियं भगवंस्तन्वमाख्यायि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृधे। श्रीशुकुवाच व्रतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूपुवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य शापवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येदभयागते पादयोर्जानुनोरुर्वो रुद्रे हृदिस्थोरसे मुखे सरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीन् विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वः करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपूर्व परवशो न्यासेद्धृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि सकारं तु भ्रूर्मध्ये डकारं शिखयादिशेत् वैकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्दिशो मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेद्बुधः सा विसर्गं फटन्तं तत्सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नमिति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरिर्विदध्यान्मं सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तेर्यादो गणिभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमाख्येव तु विश्वरूपः दुर्गे स्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान्सङ्घोषर्यूथपारिः विमुञ्चतो यस्य मिहामहाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः रक्षत्वसोमाध्वनियज्ञकल्पास्वादस्त्रियोन्येतधरोवराः रामोद्रिकूटे स्वतविप्रवासे सा लक्ष्मणोऽभ्यादिभर्ता मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान्नारायणः पातु नः सहाशात् दत्तस्तु योगादथ योगनाथ पायाद् गुणेशा कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाध्यशीर्षा मां पतिदेवहिलनात् देवर्षिवर्या पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निर्यादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात् द्वन्द्वाद् भयाद् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादेन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातो धर्मावनायुरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरभ्यात् गोविन्द आसङ्गो मात्तवेणुः नारायणः प्राण उदात्त शक्तिर्मध्यं दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः देवो प्राणे मदोग्रधन्वा सायं तथा मावतु माधवो मां दोषे हृषिकेशवतार्धरात्रे निशीथ एकोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्रि सा प्रत्युष ईशोषिधरो जनार्दनः दामोदरोऽभ्यादनुसन्धिं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानल्तिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दब्धिदन्दग्ध्यर्षण्यमाशो कक्षं यथा वात्सखो हुतासः गदेशनिस्पर्शन् विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड्यजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकरक्षरक्षो भूतग्रहश्चूर्णे चूर्णयारीन् त्वं जातु धानप्रमथ प्रेतमातृपिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् दरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवधारी सैन्यो मीशप्रयुक्तो मम छिन्द छिन्दी चक्षुंसि चर्मच्छतचन्द्रछादयदुषामघो नाम हर पापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्येव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्येव वा सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्तकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयाप्तिपकाः गरुणो भगवान् स्तोत्रस्तोवश्छन्दो मया प्रभो रक्षत्तु शेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरिर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणः यथा हि भगवानेव स्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया
तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्न सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षुदिक्षूर्ध्वमथा समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजा मघवन्निदमाख्यातं मर्मनारायणात्मकं विजयस्यञ्जसायेन दंसितो सूर्यूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साधु सात् स विमुच्यते नाकुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्य विग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च करेचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्दुजा योगधारणया स्वाङ्गं जहावुषा मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययो चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र दुजक्षया अग्नान्यपतत् सद्यः सा विमानो ह्यवाक्सिराः सा बालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम सोमन्नुगात् श्रीशुक उवाच या इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीनारायणकवचम् श्रीराधाकृष्णचरणकमलार्पणमस्तु श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, पाठ करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में आसुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।